हमीरपुर शहर के पास नेरी गांव में स्थित हॉर्टिकल्चर एवं वानिकी महाविद्यालय लगातार क्षेत्र के किसानों को बेहतरीन किस्म के पौधे, फलदार पौधे और दूसरे हर्बल पौधे उपलब्ध करवाकर क्षेत्र में इकोनॉमी इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है। अभी तक ये महाविद्यालय करीब 5 लाख पौधे लोगों को दे चुका है। अगर यहाँ के वैज्ञानिकों की बात माने तो इन्होंने ये अद्भुत कारनामा कर दिया है कि जो हर्बल प्लांट 15 और 20 साल की उम्र में जाकर फल देते थे, अब 2 या 3 साल के बाद फल देने लगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हरड़, बेहड़ा, आंवला, जामुन, रीठा और अन्य कई प्रकार के फल हैं। नेरी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी has developed variety of herbs and fruits. So you can see how beautiful they are coming up. Professor Dr. Kamal Sharma is dean of the university nowadays, and he has put his all energy in developing this university into a masterpiece. You can see there are hundreds of plants of hurd and other varieties that are bearing fruit now, and he is suggesting that people should adopt cultivation of these herbal varieties which are now in huge demand. There are a number of varieties that include Ritha, Harad, Bheda, Aula. They have propagated neem and other plants like chandan, sandalwood, and now they have developed red sandalwood variety also. Soon they will be able to give these plants to the farmers in the area and those who are interested into it. We'll talk to him and we'll discuss what are next plans of the university and how it is helping the locals in improving their economy and other things. Thank you very much. And this is the nursery of the university, which has developed variety of plants. This is, we call it lasod, and the fruit on this plant usually we get after 5 to 7 years, but here we can see that these plants in nursery are hardly of less than a year and have fruits on them. Here are amla plants, and this is a huge nursery. So डॉक्टर साहब, अब आप ही बताएं, मास्क थोड़ा सा हटा के, कि क्या क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पे ये हर्बल गार्डन है और साथ में हमारे जो जितने भी मेडिसिनल ट्रीज़ हैं यहाँ या फॉरेस्ट्री प्लांट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे रिसर्च चल रही है। मोस्टली जो प्लांट्स दे आर प्लांटेड इन द फील्ड, दे आर ऑफ सीड origin generally, but here we are focusing nowadays on grafted plants, because grafting has its own advantage over the seeded plants. We get the fruit in 2 to 3 years in most of the species. Otherwise, when we grow them from seed, the fruit comes in on those plants after 10 to 12 years or so. Yes. For example, in case of harad, we are having fruits after just 2 to 3 years, and even we have some plants in the pots which are giving fruits. That's too good. Otherwise, in case of harad, the trees, they come in fruiting after 12 to 15 years. In case of bheda also, we get fruits after 15 years, but in this case we are getting fruit after 3 years. And the second biggest advantage in case of fruiting of grafted plants, they are 100% true to type. It means the plant material from where we are getting the plants which we will be raising from these grafting and budding techniques, they are 100% true to type. They are
just like the mother plants from which we take the grafted material. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये बताओ कि इससे हमारा जो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, हाउ वो उनको किस तरह से आपके यहाँ से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? वो आपके पास आएँ तो क्या उनको आप किस ट्रेन कर सकते हैं या उनको आप प्लांट्स दे सकते हैं, क्या क्या? जी, हमारे यहाँ पे जैसे हम एक तो प्लांटिंग मटेरियल लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। आजकल आप देख रहे हैं कि ये तो मौसम साथ नहीं देता है, क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा है आज की डेट में। स्ट्रे एनिमल्स बहुत प्रॉब्लम फार्मर के लिए है, एंड इन दैट सेंस दीज मंकीज दे आर आल्सो बिग न्यूसेंस टू एग्रीकल्चर नाउअडेज। तो हम उन ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ही कम है या नामात्र है। तो जैसे हरड़ है, इसको बंदर नहीं खाते, इसके ऊपर कोरे का कोई प्रभाव नहीं होता, जंगली जानवर भी इसको पसंद नहीं करते। इसी तरह से रीठा है, बेड़ा है, इनको भी ये जंगली जानवर बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा फोकस है कि हम इन चीज़ों के ऊपर जल्दी से जल्दी इनमें फ्रूट आए और इनकम जो है वो फार्मर रियलाइज़ करें विद इन जस्ट 2 to 3 years, otherwise because they have to wait for a long time, and that was the reason I think the farmers were not planting these trees earlier. But with this technique of grafting and budding in these plants, there is a huge demand of these plants nowadays. ओके, तो फार्मर्स आपसे लेके जा रहे हैं जी दूर जी, दूर तक, कहाँ कहाँ तक आप सजेस्ट करते हैं यहाँ के जो प्लांट्स हैं किस एरिया के लिए बेस्ट हैं? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो हम नर्सरी ग्रो कर रहे हैं, हरड़, बेड़ा, आंवला, रीठा, चंदन, ये लोअर हिमाचल के लिए, सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारा ये जो कॉलेज है ये लो जोन में है हिमाचल प्रदेश के। तो हमारा रिसर्च फोकस जो है वो जनरली जो लोअर हिमाचल में प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके ऊपर रहता है, बिकॉज वी हैव अदर कॉलेजेस एट नॉन यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर, एंड वी हैव नाउ अ कॉलेज एट थुनाग। तो वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है वो हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स के लिए हम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके यहाँ से लोगों को बहुत फ़ायदा मिले इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू।